अच्छा बेटा, अभी हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, रिकेप कर लेते हैं। और डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, और डेप्रिसिएशन के अंदर आज हम सीखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले एक क्वेश्चन आपको दूं, थोड़ा सा रिकेप हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी सॉल्व करूंगा। ठीक है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा बेटे, ये एक सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट के बाद साल के शुरू में डेप्सिन गिवन है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है। हमने क्या किया है, एक इक्विपमेंट बाय किया 25,000 का, एंड देन एक इक्विपमेंट जो है वो हमने सेल आउट किया है। वो था 15,000 का, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000। हमने सेल आउट किया 11,000 का। और ये खरीदा था 1 अप्रैल 2017 में। कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2017 में खरीदा था। इस पे डेप्शन रेट लग रहा है 10% ऑन कॉस्ट, SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फुल ईयर है। आपने तीन अकाउंट बनाने हैं। कितने, तीन अकाउंट। पहले तो बनाए इक्विपमेंट कॉस्ट अकाउंट, जिसमें आपने बैलेंस BD लिखना होता है, इक्विपमेंट जो बाई किया वो लिखना होता है, जो बेचा वो लिखना होता है, उसकी कॉस्ट लिखनी होती है। फिर आप बनाए डिस्पोजल का अकाउंट। तो पहले आप बनाए कॉस्ट का अकाउंट, और मुझे बताएं हमारा बैलेंस CD कितना आ रहा है। कॉस्ट अकाउंट अगर आपको याद हो, याद है ना बेटा, कॉस्ट अकाउंट कैसे बनता है? डू यू रिमेम्बर? Yeah. ठीक है, तो शाबाश, कॉस्ट अकाउंट बनाए और मुझे बैलेंस CD बताएं। ओके, सी हाउ टू मेक अ कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, देर आर थ्री अकाउंट, वन इज कॉस्ट अकाउंट, one is disposal account, and one is debtion account. So now we are making equipment cost account. So first of all, we will write balance BD. Balance BD is 90,000. Yeah. Balance BD is 90,000. Then, uh, if we have purchased any of the equipment, and if there is any purchase, yes, there is a purchase, and that is 25,000. So we would record 25,000 on the debit Yeah, I side, typed the wrong value. and the reference would be bank. What what was the problem which you encountered when you were making equipment account? I added it um like the other one, 15,000. Okay, wait, wait. Now there is another transaction, but that transaction is about sale. Like we are selling something. This one, 30 June 2019, we are selling something. So when we are selling something, then equipment account would be credited, not debited, credited. The problem is what should be the amount? Amount should be 15,000 the cost, or 11,000. So we are making equipment cost account. Balance BD is on cost. Bank is on cost. What about the disposal? What about the sale value? We will consider when we say when we are selling anything, this account is made to update the cost. If we are buying anything, what is the cost? If we are selling anything, what is the cost? So cost is just 15,000. So I would credit here 15,000, and reference would be Disposal. disposal. And now what I will do, I will balance both side. I will balance both side, and 90 plus 25, it will be 1,15,000. It will be 1,15,000. And when we would deduct 15,000 from 1,15,000, the answer would be just 1 lakh. The answer would be just 1 lakh. This is the balance CD. This is the closing value of equipment. Okay, beta, have you got this thing? Yeah. Okay. Now, what you have to do, if you remember how to make disposal account, you have to make a disposal account for this transaction. In this transaction, we are selling one item. The sales value is 11,000, and the cost is 15,000. And we bought this item on 1st April 2017. ठीक है? And our year end is 31st December. We are making disposal account for the year ended 31st December 2019.
this is our year end. Like ending month is 31st December. So what you have to do, you have to make a disposal account. Can you make disposal account? Is it possible for you people? Can you do it? Yes, yes. You have to do it. Try it. I will show you the format, how to make the disposal account. I will show you the format. This was the format, if you remember. On debit side, we record the cost. On credit side, we record the sales value, that is known as bank. And the depreciation, total depreciation, you have to calculate the total depreciation. Do you know how to calculate total depreciation? If you are buying anything in 2017, then Yeah. how many time 31st December was there when you were selling it? Like our ending year is 31st December. So whenever we apply depreciation on year end, that is 31st December. So how many times 31st December was there? Today is 2019. Okay? So you have to go through it. So we record three things. DCP. D stand for depreciation, C stand for cost, P stand for price. And then we balance both sides and difference is written as profit and loss. So what you have to do, you have to make a disposal account for this transaction. Be quick, guys. See, when you are making disposal account, like you are making disposal account, okay? First of all, write you will write cost, the cost of the item dispose of. What is the cost of the Equipment. item which is disposed of? What is the cost? 15,000. 15,000. I will write on the debit side 15,000, and the reference would be Equipment. Yeah. equivalent. Second thing is when you are selling something, what is the selling price? 11,000. I would 11,000. write 11,000. Bank. And reference would be bank. Bank. And date would be closing, that is 30 June. Like everywhere, 30 June, 30 June. On every in disposal account, we write the date of the date at which equipment was sold. That is 30 June. Okay. Now the problem is when you are selling the item, when you are selling the equipment, what was its total depreciation at the time of sale? What was its total depreciation at the time of sale? So what you will do, you bought it on 2017. You have to see we are standing on this date. How many 31st December are there in between? How many 31st December are there in between? 3. 31st December 2017, 1, 31st December 2018, 2, and 31st December 2019, 3. But the problem Yeah. is we are using full year. In full year, it says you will not apply the depreciation in the year of sale. There is no depreciation in the year of disposal. So there are 3 years, but the last one would be excluded. 2019 would be excluded. We Excluded. will only consider the previous one, that is 2017 and 2018. The two So years. the 2 year depreciation, if 15,000 is the cost, you have to calculate the depreciation for 2 years. The depreciation for first year would be 10%, that would be 1,000, and second year would be same 1,000. So total depreciation is so total depreciation is how much? 2,000. So I will write 2,000, and here it will be provision for. Wait, sir, आपको 1,000 कैसे मिला? So 1,000 नहीं आएगा. Sorry, 1,000 नहीं आएगा. It would be I'm wrong. आज Yeah. पॉइंट काम नहीं कर रहा. 10% of 15,000 is 1,500. Yeah. 1,500, that is 3,000. Good, beta. Excellent. 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 Okay. Now you have to calculate both side and you have to calculate the balance. So balance would be, which side is heavier? Debit side or credit side? So debit Deb- side. Debit Yeah. side. So there is a difference of 1,000 and we write profit and loss. This 1,000 is your loss. The expense was 15,000. You bought an item for 15,000. You got the benefit of 11,000 when you sell it.
and you got the benefit of 3,000 when you were using it. By using for 2 years, you got the benefit of 3,000. Total benefits were 14,000 and you bought for 15,000. So there is a loss of 1,000. Whenever the profit and loss is on credit side, this shows there is a loss. So is it clear? Yeah, but I didn't get how you found the loss thing. Loss, 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 loss. See, what you have to do, loss is the balancing figure. Loss is the balancing Balance. figure. Like whenever you find the closing balance, same thing is used for profit and loss. Like you have to see which side is heavier, which side is higher. Yes, beta. Maha beta, which side is Right. debit side? And that Debit. is 15,000. So he will write 15,000 in total. What is the difference on credit side? What is the difference on Isn't it the same thing? G? Oh, एक minute. Minus 50. Oh yeah, 1,000. 1,000. I will write here 1,000. In reference, it would be profit and loss. Okay, beta, you got it? Yeah, Now you have to make depreciation account, provision for depreciation account. If you remember my last class, were you there in my last class? yeah, Okay, okay. Sihan, where are you there? Okay. Now see, you have to make a provision for depreciation account. Do you have the idea of provision for depreciation account? Like I made this account, if you remember. You can go through it, how I made this account. Sihan, yes. Okay, better now see, we have to make a depreciation account. First of all, you have to try to make a depreciation account. It's very easy. You have to write the balance BD, then you have to write the disposal, and then I told you one formula, OPD, opening less purchase minus disposal into percentage for PNL. Do try, better. Do try. I know it would be hard, but inshallah, you will do mistake and you will learn from this. Paul, we will write the opening balance. ओपनिंग बैलेंस जेप्सन का कितना है 30,000. कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? We are making provision for depreciation account. Where will we record the opening balance? Balance BD. credit side. Credit side, Shabas, credit side. We will record on credit side balance BD 30,000 on credit side. Now, the second part, disposal. Was there any disposal? Were we selling any item? Yeah, हम्म, कितने का सेल कर रहे थे मुझे जो सेल किया था उसकी डिप्रेशन कितनी थी व्हाट वाज इट्स टोटल डेप्रिसिएशन जो आइटम हमने सेल किया था wait, it was 15,000, नो right? नो नो 15,000 वाज द कॉस्ट टोटल डेप्रेशन जो हमने रिकॉर्ड की थी 2 साल की निकाली थी इफ यू रिमेम्बर डिस्पोजल का अकाउंट बनाया होगा हमने क्रेडिट साइड पे लिखी होगी याद आ रहा है कितनी 14,000. 3,000 Oh, अच्छा. टोटल डेप्रेशन यू रिमेम्बर मैंने कहा था ना 15,000 की हमने दी है 2017 में Yeah, 10% एक बार लगेगी देन 10% एक बार लगेगी ठीक है ना Just wait. So it is 1500, 1500 और टोटल कितना हो जाएगा 3,000 तो इट इज अवर डिस्पोजल ठीक है नो व्हाट वुड हैपन हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर फाइन करेंगे डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर फाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ये कैसे फाइन करेंगे इसके फाइन करने के लिए मैंने कहा था इस तरह के जो सवाल होते हैं ना ऐसे जो सवाल होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है परचेज होता है डिस्पोजल होता है उसमें ओपीडी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल ओ स्टैंड फॉर ओपनिंग पी स्टैंड फॉर परचेज डी स्टैंड फॉर
डिस्पोजल, मेरे साथ बोले। ओ स्टैंड फॉर ओपनिंग, opening, पी स्टैंड फॉर परचेजेस, provision, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्पोजल। ठीक है। ओके। सो ओपनिंग बैलेंस, अब इसमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इट्स वेरी इजी। हाउ यू विल अप्लाई फॉर प्रॉफिट एंड लॉस? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट देनी है, इट इज एस एल एम। वी आर यूजिंग एस एल एम, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट लेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट? व्हाट इज द ओपनिंग कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट? 90,000. 90,000, शाबाश, 90,000। Plus, what is the purchase value of the equipment? When we were purchasing the equipment, new equipment, what was its cost? उसकी cost कितनी थी? 25,000. Yes. And when we sold one of the equipment, उसकी cost कितनी थी? What was its cost? जिसको sell किया था उसकी cost बोल रहा हूँ, cost। Uh, 15,000 or 11,000. 15,000, 11,000 Oh, selling price. Selling price is only recorded in the disposal account, बस और कहीं नहीं आती। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? 90 yeah, प्लस 25,000 माइनस 15,000 इंटू 10%, क्या आंसर आएगा? 2,000 plus 25. 116,500. बेटा आप सही कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही। Huh? हाँ, गलती कर रही हैं। आप 10% पहले निकाल रही है, पहले आप प्लस माइनस करें, बाद में मल्टीप्लाई करें 10% से। Okay. 90 प्लस 25,000 माइनस 15,000, जब ये सारा आ जाएगा उसका निकालिएगा 10% जो है। 13,000. 13,000 में जरा कंफर्म करो। ये हो जाएगा 1,15,000। और नहीं, हाँ, 90 प्लस 25 हो जाएगा 1,15,000। और इसमें से 15,000 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1 लाख। और 1 लाख को 10,000 आएगा मेरे पास आंसर। कैन यू कंफर्म? 10,000. हाँ, चेक इट। लाइक सी द कैलकुलेटर। 90,000 लिखे मेरे साथ, 90,000 90,000 प्लस plus 25,000। ठीक है, 1,000 plus माइनस। 15. जी। अब जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करें 10% से। Two, 10. Oh yeah, it's 10,000. 10,000, ठीक है, ओके ओके, नो इशू एट ऑल। ठीक है, अब दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं। दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस पूरी। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000। 40,000 में से माइनस करेंगे 3,000, द रिमेनिंग आंसर वुड बी 37,000। 37. Yeah. ये बैलेंस पीडी हो जाएगा और ये बैलेंस पीडी हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस थिंग? यहाँ तक बात Yes. क्लियर हुई? सो दिस इज अवर प्रोविजन फॉर डेब्ट्स एंड अकाउंट। थोड़ा रिवीजन करें, चीज़ों को देखें। देखिए, इतने सारे लेक्चर्स हो गए, रिकॉर्डिंग भी हो गई, तो आपको लेक्चर्स देखने चाहिए ना बेटा।